Hello and welcome to yet another episode of House of Wellness. आज हम फिजिकल कंपोनेंट पर फोकस करेंगे और एनीमिया पर चर्चा करेंगे. We have with us today Dr. Abhay Bhave, a well-known hematologist from Mumbai. He has done his fellowship from CMC Vellore and the Royal College of Pathologists, Australasia, Sydney, Australia. He has an experience of 30 years plus and currently practices at Leelavati and Global Hospital. Thank you, Doctor, for coming to our channel. Thank you very much, Minaj ji and Sonam. Thank you so much for having me on your show. वेलकम डॉक्टर. मेरा पहला सवाल आपसे है कि एनीमिया होता क्या है? अनीमिया का डेफिनेशन है जब हीमोग्लोबिन और सिर्फ हीमोग्लोबिन कम हो. आमतौर पे हीमोग्लोबिन सीबीसी नाम के एक ब्लड टेस्ट से पता चलता है. एक खास इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है काउंटर, सीबीसी काउंटर. उसमें से जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें हीमोग्लोबिन की वैल्यू मिलती है. आमतौर पे हमारा हीमोग्लोबिन अडल्ट मेल के लिए शायद 14 और 18 के बीच में होना चाहिए और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन शायद 13 से लेके 16 तक होना चाहिए. अगर हीमोग्लोबिन एक मेल का, आदमी का 13 के नीचे हुआ या महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 के नीचे हुआ तो उसको WHO के हिसाब से अनीमिया माना जाता है. तो ये इवेंट है, ये डायग्नोसिस नहीं है. ये इवेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कम है. और हीमोग्लोबिन अनीमिया का डेफिनेशन होता है जब नंबर कम हो, यानी कि प्रोडक्शन कम है या उसकी क्वालिटी अगर कम हो तो उसको अनीमिया कहते हैं. उस सब दोनों चीजें, क्वांटिटी और क्वालिटी, अनीमिया के दायरे में है. So, doctor, why are seniors prone to anemia? It's not that only seniors are prone. All ages, right from birth onwards, are prone to anemia for several reasons. But as we age beyond the age of 60, the chance of hemoglobin dropping is higher. So about 15% of our population will start developing lesser hemoglobin. And it's not necessary every time. There is a reason for it. It may be a part of aging also. But in real world, I see patients coming to me at the age of 80 with a good hemoglobin. So I assume that anyone's hemoglobin starts dropping below the range which I have said, I will consider it as pathological and try to find an answer. And sometimes, despite your best efforts, in an older person, especially as we go beyond 70, there is a fairly good chance, 20%, you may not get any answer. That's called undefined anemia. And that happens in the real world, that you do your best efforts and sometimes the diagnosis is not apparent. And as time goes along, maybe 2-3 months down the line, suddenly we get an event which makes everything explainable for that past drop in hemoglobin. So it's a very dynamic event. In the older people, sometimes the answer is not straightforward and we have to really hunt or dig for it. But yes, you're right. I mean, as we age, our hemoglobin does go slightly low in about 15% of patients. ओके डॉक्टर, एनीमिया है, इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने ऑलरेडी बताया कि इसका डायग्नोसिस सीबीसी से होता है, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण हर एक एज ग्रुप के पेशेंट्स का लक्षण या सिम्टम अलग होगा. तो अगर बच्चे, तो वो लोग ध्यान नहीं देते, क्लासरूम में ध्यान नहीं देते हैं, उनका बहुत उनको फटीग या टायर्डनेस होता है और क्लासरूम से हमेशा शिकायत आती रहती है कि बच्चा या बच्ची कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं और उनके ग्रेड्स कम हो जाते हैं. जैसे हम लोग थोड़े एडोलेसेंट में जाते हैं या ओल्डर एज में जाते हैं तो फिर फटीग, टायर्डनेस, सेल्फ एस्टीम, अपने बारे में हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, जो मेरे बाकी के एज वाले करते हैं मैं उतना नहीं कर पाता हूँ. जो पहले मैं ट्रेन या स्टेशन की जो सीढ़ियाँ चढ़ता था, मैं आज मुझे दिक्कत हो रही है चढ़ने में.
और कभी कभी फटीग इतना होता है कि काम करने का मन नहीं करता है, तो वर्क प्लेस पे भी उसका असर पड़ता है। किसी किसी का मन या ध्यान भटकता है और उनको ज्यादा नींद आती है, सो स्लीपीनेस इज वन ऑफ देम। और रात को कईयों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, यानी पैरों में दर्द होता है और उनको रात को बहुत बार वो करवट बदलते हैं, पैर में दर्द होता है, उसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। तो बहुत ही वाइड और वेग रेंज है। पर जैसे हीमोग्लोबिन पेशेंट का और भी कम हो जाएगा, जैसे 7 या 7, 7.5 के करीब अगर हुआ हीमोग्लोबिन, तो फिर सिम्टम्स अलग होते हैं। फिर उसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में दर्द होता है, किसी किसी को खांसी शुरू होती है, किसी के पैरों में सूजन आती है, किसी को बिल्कुल अपने चेयर से भी हिलने को मुश्किल हो जाएगी। तो सिम्टम्स किस लेवल हीमोग्लोबिन कम हुआ है उसके हिसाब से सामने आएंगे, पर यूजुअली फटीग इज द कॉमनेस्ट। एक और चीज बताऊं कि बहुत बार अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है क्योंकि ब्लीडिंग हुआ है, तो शायद आपको वो सिम्टम बताएंगे कि स्टूल्स में ब्लड जा रहा है। किसी किसी को थोड़ा माने एम्बेरस होते हैं वो, तो बताते नहीं है, तो हम लोगों को पूछना पड़ता है कि टॉयलेट में जब भी आप जाते हो तो ब्लड दिखता है क्या, ब्लड जाता है क्या। और थोड़ा प्रोबिंग करने के बाद कई लोग बताते हैं कि नहीं, मुझे पाइल्स की शिकायत है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा ब्लड 1, 2, 3 हफ्ते में जाते हुए हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है। तो सिम्टम्स कई तरह के हैं, पर जितना ज्यादा कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा तकलीफ है। और फिर ऐसा वक्त आएगा जब हीमोग्लोबिन 10 होता है, हमारे पास कोई नहीं आता है। पर अगर हीमोग्लोबिन 7, 8 हुआ तो उनको आना पड़ता है, क्योंकि कुदरत उनको ले आती है कोई ना कोई सिम्टम के साथ। डॉक्टर, बोन मैरो टेस्ट क्या रोल प्ले करता है डायग्नोसिस में, और क्या कोई स्पेशल टेस्ट है जिससे डायग्नोसिस हो सकता है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सिम्टोमेटोलॉजी इस तरह की होती है, तो हम लोग सीबीसी से थोड़ा अंदाजा आ जाता है हम लोगों को। हम्म। क्योंकि सीबीसी रिपोर्ट में हम लोग हीमोग्लोबिन देखते हैं, व्हाइट सेल काउंट देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, ये 3 तरह के सेल्स हमारे खून में हैं। तो अनीमिया जब हम कहते हैं तब सिर्फ हीमोग्लोबिन कम होता है, बाकी के 2 नॉर्मल होते हैं, तभी उसको अनीमिया कहा जाएगा। फिर उसमें हीमोग्लोबिन के साथ कुछ इंडाइसेस होते हैं जो उस क्वांटिटी के बारे में क्वालिटी बताते हैं। तो उसमें से पता चलता है कि क्या ये हीमोग्लोबिन कम हुआ है क्योंकि आयरन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, क्या ये खून नष्ट हो रहा है। तो हमारे जहन में 3 चीजें होती है। एक तो या तो खून बन नहीं रहा है, या तो खून नष्ट हो रहा है, या तो शरीर से बाहर जा रहा है। शरीर से बाहर जाना हिस्ट्री से मुझे पता चल जाता है, या तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि आंतड़ों में से खून जाएगा। और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान ज्यादा अगर ब्लीडिंग हुआ, खासकर तीसरे या चौथे दिन जहां पर क्लॉट्स जा रहे हैं, पैड्स ज्यादा बदल रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है ये ब्लड लॉस की वजह से है। और जो दूसरा, पहला और दूसरा कारण है प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, कभी कभी उसके लिए हम लोग को थोड़ा इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन भी हम लोग को काफी हद तक पता चलता है। जब हम लोग आंखों में झांक के देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वहां जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस सिर्फ और सिर्फ ब्रेकडाउन की वजह से होता है, या तो लिवर की वजह से। तो अगेन हम लोग को एक चिन्ह मिल जाता है कि हो सकता है कि इसमें डिस्ट्रक्शन है। पहला जो कारण है प्रोडक्शन का, उसमें बोन मैरो की जरूरत आन पड़ सकती है, क्योंकि कई बार बावजूद इसके कि आपने काफी टेस्ट किए हैं, हमें आंसर नहीं मिलता है। यूजुअल हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो आयरन के लेवल्स करते हैं, विटामिन B12 की करते हैं, हड्डी के अंदर खून बन रहा है या नहीं उसकी जांच करते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कहते हैं उसको। ऐसे टेस्टों से अगर पता चल गया तो बहुत अच्छा है, तो हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर ये सब नहीं मिला, तो कई बार हम लोगों को सोचना पड़ता है कि बोन मैरो यानी कि जो हमारी खून बनाने की फैक्ट्री है मान लीजिए, वहां पर झांक के देखना पड़ेगा कि काम वहां पर बन रहा है या नहीं। और कई बार वहां पर काम कम बन रहा है, इसके लिए कम बाहर खून की नलियों में आता है। और कभी कभी अंदर काम बहुत सारा बन रहा है, पर बाहर आते आते वो नष्ट हो रहा है। तो एक काफी अच्छी आइडिया मिल जाती है बोन मैरो के एग्जामिनेशन से। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं किसी को बोन मैरो कहता हूँ, उनको पहला ख्याल आता है कि ये कैंसर है।
तो हम लोग बोन मैरो सिर्फ कैंसर के लिए नहीं करते हैं, बहुत सारे कारण हैं, पर हम लोग जरूर कैंसर के लिए भी देखेंगे। ये ऐसा पिटारा है, जब खोलेंगे सब कुछ देखेंगे अंदर, तो बोन मैरो करने के बाद हम सब कुछ देखेंगे। उसमें प्रोडक्शन प्रॉब्लम, डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, कैंसर, बहुत सारी चीजें होते हैं, इन्फेक्शंस भी होते हैं जो हम पिकअप करते हैं बोन मैरो में। तो ऐसे नहीं कि ये सिर्फ बोन मैरो के लिए। तो जब आपके डॉक्टर कहते हैं कि बोन मैरो चाहिए, वो इस मुकाम पे पहुंचे कि उनके पास आंसर नहीं है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, और आगे सिर्फ खून चढ़ाने में आपको फायदा नहीं है, वो गाड़ी की पेट्रोल टैंक की तरह हो जाएगा। आप पेट्रोल डालो, गाड़ी चलाओ। और अभी वो ये जमाना नहीं है। हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, टैलेंट है, टेस्ट हैं, तो उससे हम लोग काफी हद तक नैरो डाउन कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बोन मैरो उसमें शामिल है, और एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, ये सर्जरी नहीं है। ये आमतौर पे कमर की हड्डी से किया जाता है, ना कि रीढ़ की हड्डी से। एकदम सेफ है, वहां पर डैमेज करने लायक कुछ नहीं है। तो सिर्फ स्किन है, थोड़ा सा फैट अगर होगा तो वो है, और बोन है। और 3 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाता है लोकल एनेस्थीसिया में। तो ऐसे में इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है, और इसके रिस्क बहुत ही कम है। तो इसके लिए ये टेस्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है इन डायग्नोसिस। Okay. Doctor, what is the significance of an endoscopy, whether it's the upper or the lower GI Yeah, tract, to investigate any kind of bleeding and its role in anemia? that's a great question, Sonam. So, sometimes we've got a history that there is some blood loss. Sometimes there is no history of blood loss. So, generally out of intuition, I don't know what you call it, out of intuition, out of history taking, out of examination, I have the advantage of seeing smears. I feel that no, this is not a bone marrow problem. This is not a destruction problem. And this is not a production problem. Over the period of years as you work, even in both of your careers, you'll know that you get certain intuitions, certain thoughts that you say, no, this is not right. Similarly, we feel that no, this is most likely GI blood loss. One of the reasons is that, the hemoglobin is fine, 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 and suddenly drops. That is likely to be blood loss. So we do something called the stool occult blood, and we look for hidden blood inside the stool. And we do at least 3 to 5 consecutive days, and not just one. It can be easily missed. Remember, stool occult blood should not be done for people who are on oral iron, because it can give rise to a false positive occult blood, and unnecessarily that patient will undergo endoscopy. So whenever a doctor advises stool occult blood, it is imperative that you are not taking iron, and then you do. So what if you're taking iron? Stop it for 3 days and then do the test. Your chance of getting a false positive is lesser. Once you do an occult blood, and if it's positive, then I know there is some blood loss in the intestine. Then comes the answer to your question, what is endoscopy? Endo means inside, scopy means you put a scope and look inside. So we look inside a particular area. So if it's in the gut, upper side, it's called gastroscopy, gastro being stomach. And if it is from below, it is called colonoscopy, colon being the large intestine. And by doing these two, we get a very good idea whether there is any ulcer, erosion, breakage, growth, polyp, cancer, which can contribute to the blood loss and therefore the anemia. And you'll be surprised that in 67 to 70% of the times, if a patient has iron deficiency anemia, the chance to pick up an answer in the endoscopy, both from above and below, is very high. And if we don't get an answer there, we do capsule endoscopy to look at the 16, 18 feet of small intestine. We obviously can't put a scope there, but we can do a capsule endoscopy and still get answers. So I'm telling you, the way research and the way talent is available in most of the cities and towns, we are able to do these very simple procedures to get very effective answers to A, make a diagnosis, B, make a therapeutic intervention or a change, which can change the patient's life. So endoscopy is very important in patients of anemia, especially the stool occult blood is positive, or they have got severe iron deficiency anemia, where the cause is not just a poor diet. It has to be something more. I've got so many patients of colon cancer
of stomach cancer who, they don't have symptoms, or if they have, they don't give importance. Look, all of us at the end of the day have some aches and pains when we come. We are not going to rush to a doctor. So they also have, mild constipation, a little bit of pain while passing stools, but they feel it's a normal phenomenon. And everything is now brought down to stress. Everything is stress. So then we lose time with them and they don't come to us in time. But many times by getting these endoscopy done, there is a very good chance, 2/3 of the chance that we'll pick up something. So, doctor, what is the treatment for it? The treatment for anemia Bleeding, yeah. is based upon the cause of anemia. So if Mhm. it's a production fault, we try to find out what is the cause of the production not being adequate. Is it because of iron deficiency? We give iron either oral or intravenously. Mhm. If it is because of B12 deficiency, the same applies. We give injections of B12. Now we got very good preparations which are kept below the tongue and they get absorbed. So no injections. If it's because of less production inside the bone marrow, because of the stem cells, the cells which make blood going down, we got phenomenal medications for that, right from tablets to injections to bone marrow transplantation. If it's because of a malignancy, we identify the type of malignancy and we treat the malignancy. And today, I'm very happy to tell you that our ability to treat cancers is phenomenal, provided patients come to us in time. We have a problem of patients not coming to us in time, and hence then our outcomes are not good. And it's just because we are not aware or we don't go to the doctor in time. So treatment is available for production. In destruction, it is two types, immune and non-immune. If it's immune, we use steroids, rituximab. If it's non-immune, we try to find out which is the cause. So everywhere, and I've already spoken about the loss of blood, everywhere, if we can identify the cause of anemia, treatment is very easy. And sometimes the answers are obvious, treatment is simple. Sometimes they can hide something very sinister inside the intestine like a cancer and come in the front innocuously as iron deficiency. So let us not be fooled. We should go into the depth of what the patient has and his symptomatology and then match it to the reports. And this is what we call in medicine CPC, clinical pathology correlation. So we have to find out if someone, अगर किसी खाते पीते घर के आदमी का आयन कम हुआ तो जरूर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अनलेस डाइट बहुत ही खराब है तो वरना आयन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. सो हम लोगों को और गहराई तक जाना पड़ता है देखने के लिए कि और कुछ छुपा हुआ है या नहीं अंदर. So we have got the facilities to do things, provided we think, provided patients come to us, provided patient gives us a good history, and provided the doctor has time to take history. That is also an issue. Thank you so much, Doctor, for your valuable time, guidance, and I'm sure our viewers will benefit from today's episode to a great extent. Please don't get scared, get your CBC done, and Yes. please visit the doctor. And thank Sonam, you. can I just make Sure, a statement? Sure. The community has to know that unfortunately in India, incidence of anemia is very high. We are looking at about 50 to 60% of our population, especially our young population, being affected by anemia, which is very distressing because this is our future. And if they grow with less iron, then our future is also going to be suspect. And if it's a girl who's going to get pregnant, iron deficiency in pregnancy is almost to the tune of 60 to 70%, which means a large number of our girls are getting pregnant with iron deficiency anemia. Something we cannot allow. We have to have a movement at the local community level, which makes people aware of their hemoglobin status. They have to check themselves. We've not spoken about a condition called thalassemia, which is in certain communities. And if two thalassemics marry each other, there's a 25% the child could be a thalassemia major, which is a very severe anemia needing transfusion, something that we don't want in the community, right? So it's very important that we remember that anemia is common. We do the test properly, meet a doctor, get the test done. If you can't handle private sector, we've got a very good municipal and government setup.
which do tests at very cheap rates. And we are very fortunate that they're doing such great service for us. So make use of all these facilities and get it done, but come to an answer, take care of it. Don't be scared of anemia. Yeah, so thank you so much for pointing that out, doctor, so that when people get married, they have to check their all of those tests that they have to do, Yeah. plus the thalassemia test also. Absolutely. I think कुंडली नहीं मिलाएंगे तो चलेगा. This is prerequisite. Absolutely, Sanam. I agree with you. Yes. More than Kundli is important to match thalassemia Absolutely. reports in certain communities. Not everybody, certain communities. We have to be aware that certain communities do have a high incidence of thalassemia. And then they don't talk to each other. That's the problem. They don't declare that I'm thalassemia. Right. But I must admit that this generation today is different. They are a little bit more aware and forthright. And therefore, I'm looking at more kids, opening up and saying, yeah, I'm thalassemic, so what? I mean, let's just match. And once again, I'll say that if two thalassemic minor, they love each other, want to get married, please allow them. Because when the girl gets pregnant, we can find out through technology whether the growing fetus or the child is normal, minor, or major. Wow. And we can give them an option of undergoing a medical termination of pregnancy if there is a major. We can give an option if they want to take it. Yeah. So when the girl is pregnant and they go to the gynac, they have to tell them, Yes. show them that they have thalassemia and they are thalassemia minor. So they And the other way around, Minasji, other Yeah. way around also, that you tell them that the obstetrician should do the thalassemia test. Correct. They should also do the thalassemia test. So it's, we are together in this. So Of course. as long as the event is taken care of, whether it's done by the patient or whether the obstetrician, I don't care. I just want it done and I want it to be sorted out. Yeah, but no, this is a great point for creating awareness. Yeah, We should do this. Definitely. Thank you, doctor. Thank you Right. so much. Best wishes. And Thank you for having me. Thanks. very welcome, doctor, and cheers to wellness. Cheers to wellness. Bye. Bye.